We'll start in a minute. In the meantime, please switch on your videos. Ishika, you too. Okay, so we are revising wave optics currently. Okay, so the last topic that we revised was to do with diffraction. Okay, in diffraction, we did multiple things starting from diffraction. Then we also talked about the limit of uh, ray optics, and we also discussed about the resolving power of a microscope and that of the resolution of a telescope. ठीक है, तो हमने ये सब चीजें डिफ्रैक्शन में देखी. Everybody please switch on your cameras. बेटा उस चीज के लिए अच्छा नहीं लगता है कि हम भी इतने मतलब you are now you know pretty big students, and why should I be reminding you of such a small thing? Please keep your cameras on. Let's not spend time on that part. Okay, so now we'll move on to the last topic in this chapter, which is to do with polarization. Okay, we will again, like we did till now, we will revise it through questions. Can the sound waves in air be polarized? Please answer that question. Can sound waves in air be polarized, and give reasons for your answer? बेटा वीडियो ऑन रखिए और इंटरेक्टिव रखते हैं क्लास को, तभी सीखेंगे आप. Keep answering these questions. Can the sound waves in air be polarized? Okay, the answer is no. Can somebody give me the reason? What is the reason for this? Please switch on your cameras. What is the reason for this? See, sound waves in air are longitudinal waves. Okay, longitudinal wave का मतलब है कि if this is the propagation of energy, okay, then the vibration is parallel to the propagation of energy. Okay, only transverse waves can be polarized. Okay, in air sound is not transverse. Okay, what are polaroids? Can somebody answer that question? What are polaroids? So please एक बार वो repeat करना, यही can the sound waves in air is the polarized, give reason, ये वाला. So sound waves cannot be polarized. The reason is they are longitudinal waves. Longitudinal का मतलब उसमें जो vibration होते हैं वो parallel to the propagation of sound होते हैं. Only transverse kind of waves जो होती हैं वही polarize हो सकती हैं, जैसे कि light waves या फिर waves on a string.
जैसे ये wave on a string है, like a guitar string. Okay, they can also be polarized because they are transverse in nature. Okay. What are Polaroids? Polaroids क्या चीज हैं? So in the book, the word uses Polaroid. Okay, they are also known as polarizers. We should know both the name. Actually, Polaroid is a brand name. Okay, it's like calling photocopy Xerox. Okay, or a detergent a Surf. Okay, but in the book, the name used is Polaroid. It is a brand name of polarizers. Okay, so polarizers क्या होते हैं? What are polarizers? Okay, polarizers allow light polarized only in some direction to pass through. ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में ही पोलराइज्ड जो लाइट है उसी को वो पास थ्रू करने देते हैं. एंड फिजिकली व्हाट आर पोलराइड्स? दे आर मटेरियल built of long chain molecules. ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक शीट है और इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं बेसिकली, राइट, वेरी लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स. तो क्या होगा कि अगर लाइट वेव आ रही है और ये इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर है लाइट वेव का, ठीक है ना, लाइट वेव में इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, लेकिन हम केवल इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों की करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं. वी ओनली टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये याद रखिए. इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर से ही काम होता है, होता दोनों से, लेकिन हम एक को रेफरेंस मान के चलते हैं, दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, उसकी बात नहीं करते. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक वेक्टर इसका ये था. तो जो मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन में है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये वाला जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा. और अगर एक ऐसे आ रही थी जिसका ऐसे था वाइब्रेशंस, वो पास हो जाएगी. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन किस डायरेक्शन में होता है? डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. और पास थ्रू किस डायरेक्शन में होगा फिर? परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है, परपेंडिकुलर टू लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स पास थ्रू होगा, और इसी चीज को यानी परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? पास एक्सिस. ठीक है, पास एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. इट इज द एक्सिस अलोंग विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ द लाइट इज कंप्लीटली पास्ड थ्रू. ठीक है, तो हमें पास एक्सिस पता होना चाहिए, पोलराइड पता होना चाहिए. ज्यादा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कभी मॉलिक्यूल्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये ना है, नहीं है कि हमें पता ना हो, क्योंकि देयर इज अ फर्स्ट टाइम, राइट, समटाइम्स दे कैन आस्क दैट क्वेश्चन. सो हमें पता होना चाहिए. नॉर्मली क्वेश्चन में डायरेक्टली पास थ्रू एक्सिस जो है, पास एक्सिस जो है, उसके बारे में लिखा होता है. ठीक है, now there is a law that we need to remember when it comes to polarization, and this is the law called Malus law.
Okay, so can somebody remembers what the Malus law is? ठीक है, देखिए अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, एक पोलराइजर है, ये मैंने इसके पास एक्सिस बनाए हैं, दीज आर द पास एक्सिस। तो जब लाइट इसमें से आएगी तो केवल एक ही ओरिएंटेशन में होगी, अब ऐसे, तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी तो कुछ थी, लेकिन ये जब पोलराइज हो गई तो मान लीजिए ये इंटेंसिटी को अब मैं आई नॉट बोल रहा हूं। आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब मैं क्या करता हूं, एक और पोलराइजर लगा देता हूं यहां पे, उसका पास एक्सिस ऐसे है, यानी कि इट फॉर्म्स एन एंगल थीटा। तो ये लाइट आई, अब ये बाहर आएगी तो ये ऐसे पोलराइज्ड होगी। ठीक है, along this axis now what will be the intensity of this light? That is defined by Malus law। क्या बोलता है Malus law? कि अगर I नॉट पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी थी, तो उसको जब हम दोबारा पोलराइज करते हैं एट एन एंगल थीटा, द इंटेंसिटी रिड्यूसेस एंड इट बिकम्स I नॉट cos स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड? इस चीज को बोलते हैं मलूस लॉ। इसका अनपोलराइज से पोलराइज होने में का जो रिलेशन है वो मलूस लॉ नहीं देता है, ये याद रखिए। पोलराइज्ड को दूसरे एंगल पे पोलराइज करने की इंटेंसिटी मलूस लॉ से पता चलती है। और ये याद रखिए कि अगर ये मान लीजिए आई थी और ये इसको मैं आई नॉट बोल रहा हूं, तो आई नॉट जो होता है ना, ये ओरिजिनल से यूजुअली हाफ होती है, एज्यूमिंग दिस इज रैंडमली पोलराइज्ड। ठीक है ना, क्योंकि आधी उसकी रुक जाती है, आधी लाइट आ जाती है, इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर अनपोलराइज से पोलराइज करते हैं, जो पोलराइज्ड को दूसरे एंगल पे करते हैं, मलूस लॉ लगता है। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ये ड्रॉ करके समझाना आना चाहिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ज्यादातर 1-2 नंबर के आते हैं, लेकिन अक्सर आते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स। पोलराइजेशन कैन बी कॉज्ड बाय स्कैटरिंग, ट्रू फॉल्स? हमने देखा कि किससे पोलराइजेशन होता है। एक मेथड तो हमने देख लिया, पोलराइजर्स या पोलरॉइड से पोलराइजेशन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन इट ऑल्सो बी कॉज्ड बाय स्कैटरिंग? स्कैटरिंग क्या होता है कि ऐसे एक लाइट आई, एक पार्टिकल था विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, द लाइट बेंड्स, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। सो कैन इट कॉज पोलराइजेशन? yes, it can cause polarization। okay, इसीलिए जो हमें सनलाइट आती है, स्कैटर्ड लाइट जो आती है, जो स्काई का ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, वो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन होता है, कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती, मतलब एक कंपोनेंट ज्यादा होता है बशर्ते कि दूसरे कंपोनेंट्स। now another law we need to remember, okay, जिसपे कि न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, जैसे मलूस लॉ याद होना जरूरी है पोलराइजेशन में। दूसरा लॉ जो याद होना जरूरी है वो ब्रूस्टर लॉ है। somebody remembers what's the Brewster's law?
ब्रिस्टल लॉ क्या कहता है? सर ये टॉपिक कट गया। ब्रिस्टल लॉ निकाला हुआ है इस साल? सर वो पोलराइजेशन ही पूरा कटा हुआ है। एक सेकेंड, let me just see that. I didn't check that because this was a very important topic. I didn't see if they cut it out. Give me 1 second, I'll quickly check that. इसीलिए आप लोगों को नहीं आता है, हाँ? ये तो बहुत ही important टॉपिक था। ओके ओके, या तो ये निकाल दिया गया है। ओके ओके okay, no issue. So we will skip this part, which is good. So life is easier, right? We can leave this part. Okay. Okay, let's do this. Let's do other topics that are included. उसके थोड़े numericals कर लेते हैं ताकि we can close this chapter then. कैसे शो करेंगे that the width, angular width, केवल angular width की बात हो रही है, ठीक है, of the first diffraction fringe is half that of the central fringe. ठीक है ना? तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है? देखिए, एक सेंट्रल फ्रिंज होती है डिफ्रैक्शन में और फिर रिड्यूसिंग इंटेंसिटी के साथ अदर फ्रिंजेस होती हैं। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल है कि ये जो फर्स्ट मिनिमा आता है, फर्स्ट मिनिमा is when plus minus lambda by a, right? तो width of central fringe is equal to 2 lambda by a. Why? Because it is lambda by a minus lambda by a, right? So 2 lambda by a. Width, the next minima comes at नेक्स्ट मिनिमा कब आएगा? यहां पे आएगा। कब आएगा?
बताइए, एनीबडी रिमेम्बर्स? नेक्स्ट मिनिमा कब आता है? ये लैम्डा बाय ए पे आए तो 2 लैम्डा बाय ए पे आएगा। So width of first fringe is equal to 2 lambda by a minus lambda by a. ये है width which is lambda by a. So this is half of the central fringe. Okay, let's do this question. In Young's double slit experiment, the two slits 0.15 millimeter apart are illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nanometer. The screen is 1 meter away from the slits. Find the distance of the second fringe. ठीक है, तो हमें डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड फ्रिंज निकालना है। nth ऑर्डर फ्रिंज का क्या फॉर्मूला होता है? कहां पे आता है nth ऑर्डर फ्रिंज? n lambda by small d into capital D। हमें किसका निकालना है? सेकंड का निकालना है, तो वैल्यूज डाल देते हैं। 2 लैम्डा कितना है? 450 इंटू 10⁻⁻⁹ और d कितना है? 1 मीटर बाय स्मॉल d विच इज 0.15 इंटू 10⁻⁻3। ओके, to 30, so we have 60 into 10⁻⁻⁴ is equal to 6 into 10⁻⁻3, so it's equal to 6 millimeter. ओके, सो ये डिस्टेंस जो है कितना है? 6 millimeter आ गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है dark fringe from the central minimum, second dark fringe from the central minimum। is equal to 2n minus 1 by 2, 2n minus 1 by 2n की जगह। ओके, और n माइनस हाफ, जैसे भी आप याद रखना चाहें, दोनों एक ही बात है। और lambda d by d, which will be equal to 2 means this is 3 by 2 into ओके, ये हमने निकाला ही था दिस पार्ट। पूरा क्या आया था? ये
with 2 here, it came to be 6, right? So this part was 3, okay? So 3 millimeter. I'm just reusing this calculation here. Okay, so this will come to be 4.5 mm. You can apply the whole formula and solve, but I can reuse this calculation. Take it. A beam of light consisting of two wavelengths of 560 and 420 nanometer is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. Find the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both wavelengths coincide. The distance between the two slits is 4 mm. Okay, so d जो है small d is 4 into 10 raised to power minus 3 meter. Okay, and the distance is 1 meter. ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है. Can somebody tell me कि करेंगे कैसे? I'll do the question, but somebody has to tell me कि कैसे करेंगे. Can somebody tell me कैसे करेंगे? ये डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होगा क्वेश्चन. तो देखिए ये जो है, ठीक है, तो वेवलेंथ 1 मैं कह देता हूं लैम्डा 1 इज इक्वल टू 560 into 10 raised to power minus 9 meter, and lambda 2 is equal to 420 into 10 raised to power minus 9 meter, right? तो ब्राइट फ्रिंजेस ओके कब आएंगे? ओके, fringes due to first lambda will come at, let's say, n d by small d lambda 1, right? And bright fringes due to second lambda will come at, we use another counter here, d by small d lambda 2. Now we need to find where for some integral values of this, these things become equal. ठीक है ना? तो इसको अब इस तरह देख लीजिए आप, d by d तो एक ही है, सेम है. ब्रैकेट में लिख देता हूं n lambda 1, और यहां पे d, ये d by d तो कांस्टेंट आ जाएगा m lambda 2, राइट? तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? तो रख लेते हैं n lambda 1 is equal to m lambda 2.
n by m is equal to lambda 2 by lambda 1, right? What is lambda 2? 420 by 560. This will get cancelled out, right? This will go by 14. So it's equal to 3 by 4. Right? Understood? So अब ये कहां पे कोइंसाइड होंगे? अब ये वहां पे कोइंसाइड होंगे जहां पे n और m, ठीक है ना, दोनों जो है ऐसे हो कि इंटेग्रल हो और इक्वल हो, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, राइट? इट्स अ सिंपल एलसीएम क्वेश्चन. Understood? Understood? So we will get that d is 1 and m, small d is 4 into 10 raised to the power minus 3, right? Into lambda 1 कितना है? Lambda 1 is 560. LCM is 12 into lambda 1 में क्या multiply हो रहा है? n is 3. Just a sec. At the 12. It will be matching at the 12th fringe for the fourth fringe of this. M is 4, N is 3. To take it. We don't need this, right? This 14. So 442 to 10 raised to the power minus 3. What am I missing here? Oh, I am missing the, sorry,
I did the calculation mistake here. Let me do it here. Okay, so T by D into N, which is N is coming out to be 3 into lambda 1. Lambda 1 is 560, but I didn't put this, right? So this is 1 by 4 into 10 raised to power minus 3 into 560 to 10 raised to power minus 9. Now it's okay. So this will be 420 and this is 420 to 10 raised to power minus 6 meter. Okay, so that is the answer. So at that distance, both of them will coincide. Okay, it will be the fourth fringe of lambda 1, third fringe of lambda 1, and the fourth fringe of lambda 2. Okay, and how would it look like? It will look like this. So let's say let me draw simply. Central fringe, first fringe, second fringe, third fringe. Okay, this is of the larger wavelength. और जो shorter wavelength की fringes होंगी, let me draw with another color. This is the central fringe. This is the first fringe. This is the second fringe. This is the third fringe. And it is the fourth fringe. Okay. So इसकी 3 fringes complete होंगी. इसकी 4 होंगी और blue वाले की 3 होंगी. Why? Because n by m is 3:4. और यही पैटर्न रिपीट होगा. तो आफ्टर this is, we can also write it as 4.42 millimeter. After 0.42 millimeter, the exact same thing will repeat. Okay, 4 इसकी होंगी और 3 इसकी. Okay. Any doubts? See, such a question can come anyway because it's reduced syllabus, so they have to ask something from interference and diffraction only. Okay. Now let's do this. How will we do this question? Yellow light of 6,000. Anybody can tell me what is this unit? ये क्या यूनिट है? What is this? Armstrong. हाँ, this is angstrom. Okay, angstrom is equal to 10 raised to the power minus 10 meter. Okay, तो ये हमें पता होना चाहिए. Angstrom illuminates a single slit of width 1 into 10 raised to the power minus